Limited. Am I audible, madam? आवाज आ रही? Yes, sir. Yes, sir. आज भाभा यूनिवर्सिटी को बड़े हर्ष का विषय है कि आईआईटी के सपोर्ट में एमओयू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड एआईसीटी के रिस्पॉन्सिबिलिटी में आरकेडीएफसीटी इम्पैक्ट लेक्चर ऑर्गेनाइज करा रहा है, जो कि हमारे स्टूडेंट के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, न्यू स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम डेवलपमेंट के लिए, जैसा कि करंट में डिमांड है, उस पर एक बेस्ट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज भाभा यूनिवर्सिटी में किया जा रहा है। और आज के रेनाउंड स्पीकर डॉक्टर टीके परवलिया जी, जो कि टेक्निकल यूनिवर्सिटी राजस्थान कोटा से हैं, भाभा यूनिवर्सिटी उनका वार्म वेलकम करती है। और मैं चाहता हूं कि हमारी भाभा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स रेनाउंड स्पीकर से गाइडेंस लें और ये न्यू स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम का एडवांटेज लें। आज के इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर डॉक्टर झाला बधाई के पात्र हैं और एंकर डॉक्टर अमृता पहाड़िया, जो कि एंकरिंग कर रहे हैं, और पूरी टीम भाभा यूनिवर्सिटी की ओर से बधाई के पात्र हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे स्टूडेंट को ये मील का पत्थर साबित हो। थैंक यू। Thank you for your wishes, sir. So let us start our lecture, which is being conducted by RKDF College of Technology, Bhopal, under Institute Innovation Council, MOE and AICTE Government of India 2022-23. So best of luck to all of you. Let us begin with our lecture with our eminent speaker. Please, sir, I welcome you all on behalf of RKDF College of Technology, Bhopal. Thank you. Well, good morning, Dr. Patidar, Dr. Jhala, anchor Dr. Namisha, and hope you are doing well. And I welcome all the participants this August gathering for this lecture on this intellectual property and patents. Okay, so not wasting a lot of time, I just start my presentation with the, I think my screen is visible. Yes, sir. Yeah. So what we are जैसे डॉक्टर झाला ने मुझे कम्युनिकेट किया था, यू आर organizing an impact lecture series on basically entrepreneurship development, startup, and innovation. In all the three cases, while we go for entrepreneurship development, why will be starting a startup, or while we are indulge in some kind of innovative activities, in all these three cases, what we need to secure is our intellectual property. Okay. IPR, intellectual property rights. Okay. Intellectual property को अगर अपन हिंदी में कहें तो बौद्धिक संपदा का अधिकार. The things which you are in mind, which you are is intellectually developed, should be
of yours, its financial, economical benefits should be governed by you. Okay, कोई इसको चुरा ना ले. अगर अपन इसको पास्ट में देखें तो हम लोग देखेंगे कि now we have two kind of properties. One is the tangible property and other one is the intangible properties. Tangible properties that I can touch, I can feel. I have a gold, I have a solid mobile phone, I have a plot, house, industry, building. Tangible property. I can touch them, I can feel them, I can visualize them. But there are the properties which are intangible, like Facebook. This is an intangible property. Most of the software programs are intangible ones. So likewise, the most of the property, most of the billionaires of the day are because of that intangible property. Amazon do not produce anything. Then also its promoter is billionaire. There is no tangible thing available in Facebook, but its promoter is a billionaire. So the concept of startup and innovation and entrepreneurship development start with these kind of things. While we have a intangible asset in your pocket, and those intangible assets are making you to earn your livelihood or owing something. Okay. So if we divide this intellectual property, then in India, we have these 5 basic categorization of this intellectual property. One is a patent, majorly governed with the technology, innovation. Other one is the designs that governed with the aesthetic looks of the things. It is given for first for 10 years, then for next 5 year extended. Then there is the third part is the trademark, symbol or logo, given for 10 years and then subsequently with no limit. Then we have the geographical indication and copyright. Copyright is basically given on the literature, artist, musical, etc. And it is given for the lifetime plus 60 years. Like the literary work by Munshi Premchand is under Copyright Act. But post demise of Munshi Premchand, 60 years have now been collapsed. And now anybody can reprint their work. Like Gurudev Rabindranath Tagore, anybody can reprint their work. They can use it. So it was protected till the lifetime of that author and plus 60 years thereafter. Okay. Geographical indication is basically a quality of product. Geographical indication is basically a quality of product. The product is specifies some geographical location. Some kind of that like you might have heard about basmati rice, or you might have heard about turmeric. Okay, that India claims that it is of my soil product, and it cannot be, this intellectual property cannot be transferred to somebody else. Okay, in पांचों intellectual property rights में geographical indication एक different intellectual property right है. Geographical indication indication जो है वो individual cannot file. Individual cannot file. It is a association or group of people
or some kind of non-governmental organization, or in some cases it's a state which file. Okay, so basically a geographical indication is a sign used on products that have a specific geographical origin and processes, qualities, or a reputation that are due to that origin in order to function as GI. ठीक है, इसका एक इंडिकेटर दिया जाता है, एक लोगो दिया जाता है, GI इंडिकेटर. Okay, so the intellectual property rights are divided into 5 parts: copyright, GI, trademark, design, and patents. Okay, copyright most of us do understand. हमारी थीसिस कॉपीराइट होती है, किताबें कॉपीराइट होती है, म्यूजिक एल्बम कॉपीराइट होते हैं. Okay, so literary art, musical, etc. is governed under that Copyright Act. Then geographical indication, it's a GI indicator. Okay, then patent, design and trademark. आज हम इन 3 चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे, पेटेंट, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क के बारे में. बट लेट्स सी व्हाट आर द GI अवेलेबल. ओके, as I belongs to Rajasthan, I have majorly covered these GIs from Rajasthan itself. But you can go across Wikipedia or any other source, online source, and you can find out the more number of GI. Like in Kota, we have the Kota Doria as a GI. Bikaneri Bhujia, in the category of food stuff, it is also GI. Bikaneri Bhujia. Sorry. Sanganeri hand block print, Kota Doria logo, Makrana marble. These are all uncovered under GI. Okay, अब देखिए जैसे बीकानेरी भुजिया है. Who have filed this geographical indication? Who have asked for this protection? So there is a committee. If you go for a geographical indication GI protection of Bikaneri Bhujia, okay, you will find that around 31 people are there. A group of people have filed this GI application in intellectual property, IP, intellectual property Ministry of India. Okay, then they got that GI indicator. Now those 31 people can use that GI logo itself. Okay, and definitely they will get commercially benefited that this is the original product of Bikaneri Bhujia. Okay, so it's basically a commercial protection through geographical indication. Okay, but individual cannot file it. So we come to the next part, जहां हमने कहा था कि हमारे जो टेक्निकल फील्ड के बारे में जिसमें हम ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, वो 3 पार्ट हैं: पेटेंट, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क. ठीक है, if you see it as a trademark, so trademark is basically we commonly understand is a brand name. Okay, trademark like Prestige, Hawkins, Butterfly, Bajaj, Tata. These are the trademarks. Okay, they have the set style of writing. They have set spell words. Okay, and they have the right under their value that nobody will use such kind of logo, word or name or similar kind of logo, word or name to make an illegal benefit. And if you look about it, then there are the 2 kind of trademark that we see. एक के ऊपर तो like Hawkins लिखा हुआ और ऊपर गोला बना के R लिखा हुआ है, that is registered. उसने registered किया हुआ है, उसको अभी award नहीं हुआ है. Okay, if it is awarded, then we need not to write that R. Okay, then the other part we have the design. Design is basically a pattern, configuration, shape. Like अगर मैंने बात करी प्रेशर कुकर की, तो प्रेशर कुकर का बॉडी डिजाइन, प्रेशर कुकर का हैंडल डिजाइन. ओके, प्रेशर कुकर का कोई एस्थेटिक डिजाइन. ओके, these are all comes under the design part. Okay, but what is patentable is the technical advancement, innovations, invention related to construction feature like safety valve mechanism of a pressure cooker.
This is a technical advancement. It will give a safety in a pressure cooker if the pressure arises from a certain limit. प्रेशर कुकर में एक सेफ्टी वॉल्व होता है. क्या होगा, जैसे एक डेफिनेट लेवल से प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा तो सेफ्टी वॉल्व मेल्ट डाउन हो जाता है, प्रेशर को रिलीज कर देता है. दिस इज पेटेंटेबल फीचर. This is patentable feature. So what we need is a kind of thing like कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किसी चीज में है. ओके, हम और चीज को देखें जैसे like a mobile phone. How is its outer aesthetical look is there, is industrial design. Trademark, its brand name, logo, trademark. Can we ask the participant to mute it themselves? Then we have the patent, the technology embedded in that. A technology embedded in that. Okay, like in this mobile, what is the technology there in behind? So the technology embedded in that. Okay, the patent part. Okay, so what patent basically means is the applied science, process, method, composition, device, apparatus, machine are the patentable articles. ठीक है, हम लोग अगर इसको बैकग्राउंड में देखें तो in today's date, if we summarize that, so most of the patent or technological registration are coming from computer peripherals, telecommunication, automotive, semiconductors. It comprises more than 60% of the total patents being granted. Most of the time that like if you want to start a startup, okay, so जब भी आप कोई startup funding लेने के लिए जाएंगे, then the funding agency or funding fellow, the angel, that investor or like any kind of that, they will ask for this thing. What unique you have? What unique you have? You can say it in words, but that is not certified that it's a unique one. जब आपको उसका पेटेंट ग्रांट हुआ, then you can definitely say this is the unique one and I have granted with the patent, and this particular technology is innovated by me and owned by me. That's why I am able to run this startup. ओके, तो आज हम इसी चीज को डिटेल में देखेंगे कि हम लोग इस पेटेंट्स के बारे में हमें क्या क्या चीजें जाननी चाहिए. और अगर आज मुझे पता चले, मुझे लगे मुझे पेटेंट कराना है, तो मुझे कोई जो है वो 3 इडियट पिक्चर की तरह रेंचो बनने की जरूरत नहीं है. मुझे एवरी कॉमन मैन कैन डू, एवरी कॉमन मैन कैन फाइल. ओके, इट्स अ प्रोसेस ऑफ फाइलिंग. It's a process of filing. First, process of filing of your thoughts. Process of filing of your thoughts. Then you need to establish what is technologically advancement in this. Okay. World over, most of the research, most of the intellectual property generation are from graduate student, publication, seminar, faculty consulting, industrial sponsored research, and industrial affiliated programs. This is the whole affinity in which we all are. World over, more than 70% patents are being filed by the undergraduate students only. नया thought, नई innovation, नई सोच नई जनरेशन के पास ज्यादा होती है. It's not the old generation which can thought innovatively. It's the undergraduate student which can thought innovatively. And world over, more than 70% patents are being registered through undergraduate student itself.
Mark Zuckerberg was in university while he filed his patents, while he founded his Facebook company. There were the number of people who have right from like if you see the Microsoft chairperson or any other such big names, they are right there at their undergraduate program, their university program, while they do such things. And gradually they build up the things and create that empire. Create such an entrepreneur, become such entrepreneur. Okay. So while my fellow students joining this program, they should not think that this patent or this intellectual property rights, it's a far away thing. ये तो बहुत ऊंची बात है. This is in very much in reach of yours. Okay, मैं आपको आगे बताऊंगा how it is, how simple it is, and why should you go with that. So with the patent systems, मेरी स्क्रीन कवर्ड आ रही है, मेरे ख्याल से आपको पूरी दिखाई दे रही होगी. Yes, sir. Yes. Okay. So what do you need by patents? What you need to know about patents? Who owns these rights? What are the legal rights do patent provide? What type of invention are patentable? Or in fact, what is invention? Invention होता क्या है? कहते किस चीज को invention? What are the legal requirement for patentability? Patent करना है तो उसकी legal requirement क्या है? क्या problems arise हो सकती है? What are the process of patenting? And who is an inventor? And why the claims are so important? Why the claims are so important? Okay, this is most important thing in whole of the discussion. The claims. Why the claims are so important? Okay. So start करते हैं. This intellectual property agreement come with the trade related aspect of intellectual property right, TRIPS agreement from WTO in 1995. मेरी जनरेशन के लोग जो है वो जो है इसको गेट समझौते से ज्यादा जानते हैं, GATT. Okay, at that time it was very much popular in newspapers. गेट समझौता हो रहा है WTO से, and हम लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, newspaper headlines. So this is the GATT, the part of that GATT agreement through this WTO, World Trade Organization. There is a trade related aspect on intellectual property rights, and India is in a signatory of this TRIPS agreement. And owing to this 1995 TRIPS agreement, India amended its law, patent law of 1970. क्या law amend किया था ये अपन इसमें भी आगे देखेंगे. But the more important thing that to be noticed is that I have written in third paragraph, post 20 years of the TRIPS agreement signatory, Indian patent system has not come up to a level of the like of the advanced countries. We are very far behind. We are lagging a lot in those fields. But if we see the patent history in India, it is from well before this 1995 or 1970, and the first patent was filed in 1856. In 1856, under Crown rule and Colonial Patent Act. At that time, we were not having our own Patent Act, and Colonial Patent Act was in action. And in 1856, we got a first patent registered. इसकी बात अभी अपन आगे करेंगे. And we come up with the first
Act in 1911, and where we first time defined the invention. Invention किसको कहेंगे, खोज करना किसको कहेंगे? So the invention means any manner of new manufacture and include an improvement and an alleged invention. 1911 में कहा गया कि कोई भी नया मैन्युफैक्चर, कोई भी नई चीज आपने बना ली, वो इन्वेंशन है. बट लेटर इसमें कॉम्प्लिकेशंस आई कि नया बना लेना ही काफी नहीं है, वो नया और यूजफुल भी होना चाहिए. Then Indian Patent Act 1970 was brought in. आज भी हम लोग जो पेटेंट एक्ट पढ़ते हैं वो 1970 का पेटेंट एक्ट ही पढ़ते हैं, इंडियन पेटेंट एक्ट 1970. इन इट्स क्लॉज 2(1)J इन्वेंशन को रीडिफाइन किया गया. इन्वेंशन मींस एनी न्यू एंड यूजफुल. नाउ द न्यू टर्म बीन एडेड. प्लीज आप म्यूट कर लेंगे, आप जो भी पार्टिसिपेंट जो है. तो इन्वेंशन मींस एनी न्यू एंड यूजफुल. नया भी होना चाहिए और यूजफुल भी होना चाहिए. एंड व्हाट इट शुड बी, न्यू एंड यूजफुल इज द आर्ट, प्रोसेस, मेथड, मैनर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, machine apparatus or article, substance produced by manufacturer, and include any new and useful improvement of any of them and an alleged invention. तो 1970 के एक्ट में इसको डिफाइन किया गया कि नया भी होना चाहिए और यूजफुल भी होना चाहिए. लेकिन साथ में ये भी एक्ट करा गया कि ऐसा नहीं है कोई मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट ही हो, कोई मेथड और मैनर ऑफ मैन्युफैक्चर भी हो सकता है. मेथड और मैनर ऑफ मैन्युफैक्चर भी हो सकता है, कोई मशीन एपरेटस भी हो सकती है, और कोई सब्सटेंस की बात भी हो सकती है. देन आफ्टर ट्रिप्स एग्रीमेंट that part was again amended, and now it has been more simple and to be understood by us that invention means a new product or process. न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस. ठीक है, यहां हमारे लिए बहुत सारी डायमेंशंस खुल जाती है. हमारे को किसी चीज को पेटेंट कराने के लिए ये प्रोडक्ट जरूरी नहीं है. आई कैन रजिस्टर द प्रोसेस ऑल्सो. हाउ इट कैन बी डन, प्रोसेस. तो न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस. ठीक है, चलिए अपन इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे कि प्रोसेस से इसमें यहाँ पर क्या मीनिंग है. ठीक है, सो हम कह रहे थे कि इंडिया का जो है पेटेंटिंग हिस्ट्री है, दैट इज वेरी ओल्ड. एंड इन 1856 a civil engineer named George Alfred D. Panning of Calcutta filed his first patent in India अंडर कॉलोनियल एक्ट. और पेटेंट का नाम था एन एफिशिएंट पंखा पुलिंग मशीन. पेटेंट का नाम था एन एफिशिएंट पंखा पुलिंग मशीन. 1856 में, 1857 में मिटनी हुई थी और 56 में उन्होंने पेटेंट फाइल किया था. ठीक है, व्हाट दैट पेटेंट वाज, दिस इज द ओरिजिनल ड्राफ्ट ऑफ दैट पेटेंट. लिखा हुआ है ऊपर ही, facsimile of the first specification drawing for the grant of exclusive privilege in India. Okay, and what that pankha pulling machine basically was, अगर अपन किसी राजा महाराजाओं का पुरानी पिक्चरों में देखते हैं तो एक वो कपड़े का पंखा ऊपर ऐसे जलता रहता है, छत पे लटका रहता है, एक लंबा सा बड़ा सा पंखा होता है और उसको एक पर्सन पीछे बैठ के रस्सी से खींच के उसको चलाता रहता है. ओके, सो दैट ह्यूज पार्ट जो है वो हिलता है. एंड सो व्हाट ही डिड, he attached a wheel to it like this, and now by rotating this wheel, attached to it is a rod,
will move that पंखा, that कपड़े का जो वो है उसको मूव करेगा. So then what he claimed, it required less efforts. It required less effort and a constant speed can be maintained. Pankha pulling machine, efficient pankha pulling machine that he had first given. Okay, now you see, अगर वो इस चीज को लेके एंड कहते हैं कि अब पंखे में इनोवेशन पूरा हो गया, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता. But then also world progressed and we now have multiple patents on the things. This is another patent where instead of that cloth, now they have the metal blades. Rotating principle is manual, but now manually rotating, then they have the metal blades, new innovation. Then instead of putting it on the ceiling, the same principle, again rotating by hand, but now it's on a horizontal flow. Then we come with the electric fan. Now, अब तो electric पंखा आ गया, अब तो innovation बंद, बोले नहीं. Then we come with the comfort features. Electric fan with comfort features like we have a on-off arrangement through this hanging string. Like we have the multiple blades for a long reach. ये multiple blades जो हैं for the long reach and more air throw. लेकिन इस केस में आपको बताना पड़ेगा कि पंखे में अगर नंबर ऑफ पंखड़ियां बढ़ा दी तो इससे टेक्निकल एडवांसमेंट क्या है, तो आप कहेंगे एफिशिएंसी इंप्रूव हो गई, लार्जर रीच हो गया. ओके, व्हाट द एफिशिएंसी, आप देखेंगे इस पंखे में पंखड़ियां जो है आगे से हल्की सी टिल्टेड है. ओके, टू रिड्यूस द नॉइज क्रिएटेड बाय कटिंग ऑफ दिस एयर. ओके, so these technical advancement are there. Okay, then we have added some feature, fan with the electric light. Then wall mounted fan. Till now we were having a ceiling mounted fan, the wall mounted fan. Fan with the safety enclosure like we do have in a railways. पंखे के ऊपर safety enclosure लगाया. Fan with the safety enclosure. Fan with the modified kind of use, exhaust fan. Modified use. Fan with the modified use, the same fan is there, लेकिन अब उसका क्या है, use बदल गया है. Now a industrial draft fan, induced draft और forced draft fan. उसी नॉन टेक्नोलॉजी का, पहले से जानी पहचानी टेक्नोलॉजी का यूज चेंज कर दिया हमने. Now it's a different in use. Fan with a different use, desert cooler. Okay, so नया टेक्निकल इन्वेंटिव स्टेप हो या उसका कोई नया मेथड, नया यूज, all these things are patentable. All these things are patentable. ठीक है. So what inventor give to the society? The written description of his or own invention that sufficiently teaches one of the ordinary skill in the art how to make use of claimed invention, and that sets the best mood at the time of filing the patent application. And what inventor gets? It get 20-year monopoly of the claimed invention. ठीक है. अब देखिए, ऐसा भी कुछ नहीं सोचना है कि बिल्कुल ही कुछ नया करके लाना है, बिल्कुल ही कुछ नया जलजला हो.
more than 90% patents are just the improvement, incremental improvement. 90% patents are improvements only. Okay. Improvement in what? Improvement of the non-technology. That is a new combination of non-technology, new use of the non-technology. जैसे मैंने अभी बताया, न्यू यूज ऑफ द नॉन टेक्नोलॉजी, उस फैन का अलग अलग तरह का यूज या न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ द नॉन टेक्नोलॉजी, दीज आर ऑल पेटेंटेबल, ऑल पेटेंटेबल. ठीक है. रिसेंटली 4-5-6 ईयर बैक किसी ने ट्रैक्टर के ऊपर मोबाइल का चार्जर माउंट किया एंड ही गॉट पेटेंट. अब ये तो वैसे वेल नोन है कि ट्रैक्टर में 12 वोल्ट की बैटरी होती है. 12 वोल्ट की बैटरी को उसने डीसी टू डीसी कन्वर्टर सर्किट बनाया और एक मोबाइल का चार्जर बना दिया. डीसी टू डीसी कन्वर्टर सर्किट भी पहले से अवेलेबल था, ट्रैक्टर भी पहले से अवेलेबल था, उसकी बैटरी भी पहले से अवेलेबल थी. बट व्हाट ही सजेस्टेड इज द न्यू यूज ऑफ दोज नॉन टेक्नोलॉजी, न्यू यूज ऑफ दोज नॉन टेक्नोलॉजीज. ओके. What are the basic requirement if I thought of मुझे पेटेंट कर? पहला क्या होना चाहिए? बेसिक रिक्वायरमेंट, इट शुड बी नोवल और एंटिसिपेशन. इट शुड बी ए इन्वेंटिव स्टेप. इट शुड बी हैविंग ए इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी. उसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के एप्लीकेबिलिटी होनी चाहिए. shall not fall under the definition of non patentable inventions. हर कंट्री का अपना एक सेल्फ डिक्लेरेशन है, क्या पेटेंट किया जा सकता है और क्या पेटेंट नहीं किया जा सकता. एंड इनेबलिंग डिस्क्लोजर्स. आपको जिस चीज को आप पेटेंट करा रहे हो उसको कंप्लीटली बताना पड़ेगा, कैसे से कहां तक. यू कैन नॉट हाइड एनीथिंग देयर. ओके. अगर अपन जो है ये कभी और कभी मिलेंगे तो अपन नोवेल्टी की बात करेंगे कि मैंने जो सोचा वो नोवेल है, ये मुझे कैसे पता चलेगा. प्रायर टू फाइलिंग पब्लिकेशन या नॉन वर्ड या कॉमन जनरल नॉलेज से ये कैसे पता चलेगा कि मेरा सोचना नोवेल है. ठीक है. चलिए अब हम दोबारा आ जाते हैं. इन्वेंटिव स्टेप का मतलब क्या है? टेक्निकल एडवांस एज कंपेयर टू एग्जिस्टिंग, हैविंग इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, नॉलेज और बोथ that make invention to a person skilled in the art. Okay. Now, what the inventive step means? देखिए, किसी पर्सन ने चेयर के नीचे कैस्टर व्हील लगा दिए. Then he claim कि इससे पर्सन का मूवमेंट इजी हो जाएगा, आगे पीछे घूम जाएगा, इजियर टू वर्कआउट है. ठीक है. ये पहले से नॉन है और पहले से किसी ने पेटेंट करा रखा है. अब मुझे पता लगा मैं करना चाहता हूं तो मैंने क्या किया, इन्हीं कैस्टर्स को टेबल पे लगा दिया कि साहब अब इससे टेबल आसानी से सरकने लग जाएगी. इट शुड बी इन्वेंटिव स्टेप. नो, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. ये कुछ इन्वेंटिव स्टेप नहीं है, ये तो बेसिकली सम काइंड ऑफ एड मिक्सचर है. कोई नया यूज नहीं है, कोई नया टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है. व्हाट कुड बी काउंटेड इन इन्वेंटिव स्टेप? लाइक मेटल का व्हील बना दिया, इट विल बी मोर स्टेबल एज कंपेयर टू अर्लियर व्हील. डबल व्हील कर दिए, इट विल बी मोर स्टेबल. इसका जो है ग्राउंड एरिया बढ़ जाएगा. इस व्हील पे ब्रेक लगा दिए, इस व्हील पे ब्रेक लगा दिए, सो लॉकिंग अरेंजमेंट हो जाएगा. दीज आर द इन्वेंटिव स्टेप्स. ओके. जैसे मैंने पहले ही बताया, हर कंट्री का कुछ वेल एस्टेब्लिश्ड लॉ है
or looking to the larger benefit of the society, of the people of that country, हर कंट्री ने एक डिस्क्लोजर दिया हुआ है कि मैं क्या पेटेंट नहीं करूंगी. लाइक इन इंडिया, लास्ट पॉइंट देखिए, लाइक इन इंडिया मेथड ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर आर नॉट पेटेंटेबल. frivolous and contrary to well established law. अगर कोई चीज वेल एस्टेब्लिश्ड लॉ के कॉन्ट्ररी है, contrary to public order or morality or serious prejudice to the human, animal or plant life, discovery of scientific principle, discovery of new non-substance or discovery of new property or new use of non-substance, these are non-patentable. What are more non-patentable? Process of medicinal, surgical, curative, prophylactic, diagnostic, therapeutic, or any other treatment of human being, animal, ये सब नॉन पेटेंटेबल है. In India, we have the computer program also non-patentable. Mathematical, business method or computer programs. Computer programs not patentable है, but method patentable है. Okay. So there are the certain, कुछ ऐसी भी कैटेगरी है जिसके लिए अपने को किसी थर्ड एजेंसी से लाइक कोई जेनेटिकल मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, बायोटेक के फील्ड में होता है, केमिस्ट्री के फील्ड में होता है, then we need to take a separate permission from that authority also that I would like to file a patent. ऐसा लॉ हर कंट्री में नहीं है. यूएस में आप जाएंगे तो आप एग्रीकल्चर भी पेटेंट करा सकते हैं, आप मेडिकल इक्विपमेंट भी पेटेंट करा सकते हैं. इन इंडिया इट कैन नॉट बी. ठीक है, चलिए अब अपन आ जाते हैं एक्चुअल प्रोसेस फ्लो के ऊपर. अभी तक मेरे ख्याल से आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि जब अपन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो हम लोग 5 कैटेगरी में बात करते हैं. दैट इज द कॉपीराइट, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स और डिजाइन. डिजाइन और ट्रेडमार्क बेसिकली एस्थेटिक लुक और ब्रांडिंग से रिलेटेड है. ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एंड कॉपीराइट एक डिफरेंट आर्टिकल है. एंड वी आर, हमारे जो जिसकी बात हम करना चाहते हैं और जिस की दिशा में, जिस प्रोग्रेस में हम जाना चाहते हैं, वो पेटेंट्स हैं. सो पेटेंट्स इज बेसिकली ए पार्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. हमारे यहाँ 5 डेफिनेशंस हैं, 5 तरह की कैटेगरी कर रखी है. कुछ कंट्री में 7 है, कुछ कंट्री में 9 है, कुछ कंट्री में 3 ही कैटेगरी है. ओके, ये कंट्री वाइज डिफरेंट है. ठीक है. व्हाइल डूइंग द पेटेंट्स, हमें अपने पेटेंट ड्राफ्ट को 2 पार्ट में बनाना पड़ेगा. वन इज द क्लेम एंड अदर वन इज द डिस्क्रिप्शन. ठीक है, देखिए हम लोग सब रिसर्च पेपर लिखते हैं और उस रिसर्च पेपर को प्रिंट कराते हैं. वो रिसर्च पेपर आपका सामने वाला पब्लिशर क्यों छापेगा? व्हाइल यू हैव द नोवेल्टी, और आपने कुछ एडिशनल प्रूव किया है कि प्रीवियस रिसर्चर्स ने ये किया था और मैंने ये कर दिया, मेरे रिजल्ट ऐसे बेटर है. मेथड है, उस मेथड से मैंने ऐसा किया, डेफिनेटली मेथड है, ये तो बहुत बढ़िया बात है. उसमें इंक्रीमेंटल वैल्यू है तो आपको बताना पड़ेगा क्लेम. यहां पर क्लेम कहते हैं, वहां कहते हैं कंक्लूजन में कि पहले ये होता था अब मैंने ये कर दिया. एंड लुकिंग टू देयर मेथड एंड कंक्लूजन, वो पेपर वाला, रिसर्च पेपर वाला रिव्यूअर आपकी नॉवेल्टी को असेस करता है और कहता है कि इट्स नाउ पब्लिशेबल. द सेम पेपर यू कैन पेटेंट ऑल्सो एज द मेथड. The same paper you can patent also with the method. And what method? वही सेम पेपर जो हमने इसमें डिस्क्राइब किया है, जो हमने उसमें लिखा है. ठीक है, so that can be patentable. Okay.
Now, how the claims are important? How the claims are important? How the claims are the key? देखिए, मेरे पास एक प्लॉट है, एक मकान है, मैं कैसे कहूंगा ये मकान मेरा है? तो हम कहते हैं मेरे पास ट्रेस पासिंग अवेलेबल है, एक रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, उस रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ है कि मैंने इतने रुपए में खरीदा, उसके पीछे एक मैप लगा हुआ है, उस मैप में लिखा हुआ है मेरे प्लॉट के सामने सड़क है, बगल में ये रहता है, इधर बगल में ये रहता है और पीछे ये रहता है। बाउंड्रीज आर डिफाइंड एंड इसका मेजरमेंट इतने फीट बाय इतने फीट का है। दैट्स हाउ आई बिकम द ओनर, आई बिकम द ओनर ऑफ दैट प्लॉट और ऑफ दैट एग्रीकल्चर लैंड। अगर मैं टेंजिबल प्रॉपर्टीज की बात करूं तो आई हैव टू ड्रॉ द बाउंड्रीज, मुझे बाउंड्रीज डिफाइन करनी पड़ेगी, बाउंड्रीज ड्रॉ करनी पड़ेगी। द आउटलाइन बाउंड्रीज, इतनी बड़ी जमीन मेरी है, आपसे पूछेगा कैसे है, ये रजिस्ट्री है, ये कागज है, ये इंद्राज है, ये ऐसा करा था वैसे करा था, इसमें मेजरमेंट लिखा हुआ है, बाउंड्री लाइंस खींची हुई है, दैट्स व्हाई इट इज माइन। इसमें अगर आप खेती करोगे तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे। When is established with the tangible property, the same boundary, the same trespassing need to be established for intangible properties also. बौद्धिक संपदा में भी आपको ऐसी ही ट्रेसपासिंग क्रिएट करनी पड़ेगी। ये बाउंड्री मेरी है और वो ट्रेसपासिंग किससे बनेगी? क्लेम्स से। आप अपना क्लेम डिजाइन करेंगे, उस क्लेम से वो ट्रेसपासिंग बनेगी। आप कहेंगे इतना इतना पार्ट मेरा है, ठीक है। अब कहेंगे कैसे? कहने में भी बड़ी दिक्कत है। मैंने कहा ये मेरा क्लेम्ड इन्वेंशन है, तो ये तो मुझे टेंजिबली दिख रहा है, सामने मेरी आंखों के सामने है। somebody came measured and the things and we denoted on the, but intangible का कैसे? So they have to be carefully draft, ठीक है। अब देखिए इंटेंजिबल ड्राफ्ट कैसे होता है। ये एक व्हाट्सएप का जोक है, मेरे ख्याल से सभी लोग हिंदी पढ़ना और लिखना जानते हैं, तो मैं इसको इसी फॉर्म में रख रहा हूँ। तो एक प्रोफेसर ने कहा कि तुम किसी को संतरा देना चाहोगे तो क्या बोलोगे? स्टूडेंट ने कहा ये लो संतरा। कि नहीं, एक वकील की तरह बोलो, मेरी बाउंड्रीज खींचो। जो क्लेम्स की अपन बात कर रहे हैं, तो छात्र कहता है मैं एतो द्वारा अपनी पूरी रुचि ये होशो आवाज में बिना किसी दबाव में आए इस फल जो कि संतरा कहलाता है, जिसकी भूमि पर, जिस पर मैं पूरा मालिकाना हक रखता हूँ, उसके छिलके, रस, गूदे, बीज सहित आपको देता हूँ। और इसके साथ ही आपको इस बात का संपूर्ण बिना शर्त अधिकार भी देता हूँ कि आप इसको छीलने, काटने, फ्रिज में रखने या खाने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। आप यह अधिकार भी रखेंगे कि आप किसी भी अन्य व्यक्ति को ये फल, इसके छिलके, रस, गूदे, बीज या उसके बिना साथ दे सकते हैं। और मैं घोषणा करता हूं कि आज से पहले इस संतरे से संबंधित किसी भी वाद विवाद, झगड़े की जिम्मेवारी मेरी है, और इसके बाद मेरा इससे संबंध, संतरे से कोई संबंध नहीं रह जाएगा। He have created a complete boundary about that orange. Okay. So why the claims are important? मैंने क्या हुआ, एक नया तरह का चाकू बनाया, और मैं कह रहा हूं कि इस चाकू को मैं पेटेंट कराऊंगा। तो मैंने क्लेम बनाया। अब वो चाकू तो जाएगा नहीं आपके कागजों के साथ, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वो लिखना पड़ेगा। तो हमने उस नाइफ को डिफाइन किया और हमने लिखा अ कटिंग डिवाइस कंप्राइजिंग ऑफ अ मेटल ब्लेड हैविंग अ कटिंग एज एंड अ हैंडल अटैच्ड टू द मेटल ब्लेड। शायद मेरी डेफिनेशन में तो नाइफ की डेफिनेशन पूरी हो गई,
नाइफ क्या होता है? मेटल ब्लेड होती है और उसके साथ एक हैंडल लगा होता है। लेकिन अब ये पेटेंट अटॉर्नीज के पास जाता है, बड़े बड़े लीगल एक्सपर्ट्स के पास जाता है, और एक लीगल एक्सपर्ट उसको पढ़ के ऐसा सोचते हैं कि ये कुछ ऐसा चाकू होगा। दूसरा लीगल एक्सपर्ट कहता है कि नहीं, ये कुछ इस तरह के नाइफ की बात कर रहे हैं जो बेसिकली ये पेपर कटर है। A third person says it's a kind of this kind of knife, which is basically a Swiss knife. And a fourth person say this is basically like this kind of thing. Now the issue is कि how effectively I have communicated my invention to the person sitting across the table, not known to me. मैं अपनी चीजों को किस तरह से इफेक्टिवली डिफाइन करूं कि मैंने क्या इन्वेंशन किया है, और उसमें मैं क्या मांग रहा हूं कि ऐसा नाइफ कोई नहीं बनाए, या ऐसे नाइफ को ऐसा यूज कर लिया जाए। व्हाट इज द क्लेम देयर? तो जितनी भी मैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैं कह रहा हूं कि मुझे इसका राइट दे दो, तो आपसे पूछेंगे राइट किस चीज का दे दो, आप मांग क्या रहे हो, पहले ये तो डिफाइन करो। सो दैट्स व्हाई क्लेम्स आर इंपॉर्टेंट। ओके, देखिए जैसे बाइसिकल का क्लेम है, बहुत पुराना क्लेम है, बड़ा पॉपुलर है। बाइसिकल, साइकिल जब सबसे पहले इन्वेंट हुई तो किसी ने इसका पेटेंट लिया होगा। नाउ ही कैन नॉट राइट द नेम बाइसिकल, उसको अपना क्लेम ही बनाना है। क्या क्या है? ट्रांसपोर्ट डिवाइस फॉर अ ह्यूमन बीइंग कैरेक्टराइज्ड बाय टू और मोर व्हील्स। दो पहिए होते हैं, आगे पीछे जुड़े होते हैं, फुट ऑपरेटेबल होते हैं, और जैसा क्लेम 1 में दिया है, देयर आर द टू व्हील्स अरेंज्ड एज अ फ्रंट एंड रियर व्हील। Transport device according to claim 2 where the foot operable means is arranged to cause rotation of the rear wheels। दोनों व्हील्स के वो जो है डायमीटर इक्वल है। टू दैट आई एम कॉलिंग अ बाइसिकल। अब कोई ऐसी डिवाइस बनाता है तो आपसे परमिशन लेगा, बिकॉज यू हैव बीन प्रोटेक्टेड विद दिस थिंग्स। ओके, अब देखिए बहुत अगर इतना भी डेप्थ में सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। आप लोग सिंपली, क्या पेटेंट होता है, पेटेंट करते कैसे हैं, है ना? तो देखिए आप लोग सिंपली जो है, इफ यू कैन नाउ आल्सो विजुअलाइज माय स्क्रीन, आई कैन शो यू सम websites. The most popular website there is www. Say Google Patents. Okay, Google Patents. Patents.google.com. Patents.google.com. You write anything there. Tractor, mobile, some keyword. Tractor mobile charger. Okay, you can write it down from the patent office here. Okay, मैं इंडिया का पेटेंट ऑफिस से सर्च कर रहा हूं तो इंडिया का नाम आएगा इसमें IN से। इंडिया IN, पेटेंट ऑफिस इन इंडिया। ओके, हमने शायद कुछ जो है बहुत अच्छा नहीं लिखा। मोबाइल चार्जर ले, नाम कुछ ट्रैक्टर के नाम से लिखा, द पेटेंट्स इन इंडिया ऑन टू द मोबाइल चार्जर्स। ओके,
आप लोग अपना अपना फील्ड, लाइक मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हूं, तो मैं इसमें लिखता हूं इंडक्शन मोटर। ओके, दे आर द पेटेंट्स ऑन इंडक्शन मोटर्स। ओके, यहाँ पर हम चाहे तो इसमें जो है और भी सर्च फील्ड ऐड कर सकते हैं, ठीक है। देन वी हैव द अनदर साइट्स एज ipindia.nic.in, intellectual property India, ipindia.nic.in, सॉरी हम लोग ई फाइलिंग साइट पे आ गए, ipindia.nic.in। This is the ipindia.gov.in. Sorry, I just forget the name. ipindia.gov.in. Okay, we have all the section there: patents, design, trademark, GI. Okay, for the copyright, there is a separate office that do not cover under this uh, Office of Controller General of Patent, Design and Trademark. Okay, Department of Promotion of Trade and Industry Trade. Promotion of industry and internal trades. Okay, so this doesn't come under that. तो आपको कॉपीराइट प्रोटेक्शन के लिए आपको अलग जगह रजिस्टर कराना पड़ता है। एंड ऑल द थ्री देयर इज अ पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क एंड जीआई। ओके, होल ऑफ द लिटरेचर इज गिवन देयर। आप किसी भी पार्ट को पेटेंट्स के बारे में जाएंगे, अब यू विल हैव अ नंबर ऑफ पब्लिकेशन देयर, what are the patent report, what are the patents. Okay, there are number of service matters are there, IP awareness programs are also there. There is the institute of Rajiv Gandhi National Institute of Intellectual Property Management. Okay, they create some training programs also. Okay, there are some quick information also, they have online webinars also, they have joint workshop also. Okay, and this is the one of the more important thing is the WIPO, World International Property Organization, Intellectual Property, WIPO, 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 World Intellectual Property Organization, WIPO International. ओके, यहाँ पर भी हम लोग जो है आईपी सर्विसेज के बारे में होल डेटाबेस इज अवेलेबल देयर। ओके, चलिए अपन दोबारा आईपी इंडिया साइट पे आ जाएं। तो यहाँ पर अपन देखेंगे, यहाँ पर 3 पार्ट में अपने को यहाँ दिया हुआ है। दिस अ कॉम्प्रिहेंसिव ई फाइलिंग, कॉम्प्रिहेंसिव ई फाइलिंग, इट इज गिवन कॉम्प्रिहेंसिव ई फाइलिंग, पब्लिक सर्च एंड डायनेमिक यूटिलिटीज। You can directly file your patent through comprehensive e-filing. You can search the public searches. Okay, यहाँ पर आपको नॉट अवार्डेड ड्राफ्टेड पेटेंट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है, जिनको आप देख के ये सीख सकते हैं कि मेरी पेटेंट एप्लीकेशन में क्या मैं किस तरह से बनाऊं। ठीक है, सो while we I just talk out comprehensive e-filing, तो आपको e-filing गेटवे पे लेके जाएगा and he will ask पेटेंट ई फाइल करना है, व्हाट यू नीड टू है, ई फाइलिंग ऑफ पेटेंट, पेमेंट्स करने हैं, वाइपो की साइट पे जाना है, ट्रेडमार्क फाइल करना है, डिजाइन फाइल करना है, या ज्योग्राफिकल इंडिकेटर फाइल करना है। ओके, सो इन द कॉम्प्रिहेंसिव ई फाइलिंग यू हैव ऑल द थिंग्स अवेलेबल। You can go across, like suppose if I file it e-filing, I will be moved to an external site, there will be site will be opened. Okay, you have to create a username, password, but before that you need to have a digital signature. Okay, you can have a digital signature from any of the vendor in nearby, class 3 kind of digital signature. Okay, so आप इसमें login करें and then after filing that
ओके, हम लोग इसको फाइल करते हैं, फाइल के बाद पब्लिकेशन, 18 months is the publication time. If you want an early publication, तो आप अर्ली पब्लिकेशन चार्ज फाइल कर लीजिए, वो विद इन 1 month पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। देन देयर इज अ रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, 48 months के अंदर अंदर रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन फाइल की जा सकती है। वहां से एग्जामिन होके आता है, दे से इट के इन चीजों का एक्सप्लेनेशन दीजिए, ठीक है। तो आप FER सबमिट करते हैं, फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट का जो है सबमिशन करते हैं, उस सबमिशन का फिर से रिव्यू होता है, एंड देन द ग्रांट ऑफ पेटेंट। इफ यू प्रोसेस विद द अर्ली पब्लिकेशन एंड अर्ली ग्रांट, you may be get up to a patent within a year or two. If it's a normal process, it take 4-5 years for grant of the patent. Okay. जैसे मैंने अभी बताया आपको, दो तरह के सॉल्यूशन पाथ हैं। आप किसी PIC सेंटर में चले जाएं, IPR सेल में चले जाएं, आपके नियर बाई कहीं भी होगा। गवर्नमेंट के PIC सेंटर हर जगह, नॉर्मली डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के ऑफिस में PIC सेंटर्स है, ठीक है। दे फाइल इट फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके। देयर आर द सर्टेन एजेंसीज लाइक NRDC, नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट काउंसिल, ओके। आप उनको अपना पेटेंट सबमिट कर दीजिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट फाइल करेंगे, बट दे आर हैविंग द शेयरिंग एग्रीमेंट देन, ओके। आपकी शेयरिंग होंगे, उसके राइट्स जो है फिर आपके शेयर होंगे, ओके। यू कैन ऑल्सो सेल्फ फाइल, जैसे मैंने अभी आपको बताया, आप वेबसाइट खोलिए, it just takes 1,600 rupees, and you can digitally file. What we required is a e-signature, digital signature, and that net banking or credit card or debit card. You will register at an entity, digitally sign the draft, make the payment, got the acknowledgement, and generate of the CBR report. ओके, ये CBR रिपोर्ट, जैसा अभी मैंने दिखाया आपको पेटेंट के लॉगिन साइट कैसे दिखती है। आगे जाके आपको इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपने न्यू एप्लीकेशन सेलेक्ट करके, यू विल बी हैविंग अ न्यू एप्लीकेशन करेंगे तो इस तरह का एक फॉर्म खुलेगा, जिसमें टाइटल ऑफ इन्वेंशन, एड्रेस, कौन क्लेम्स क्या है और इन्वेंटर्स कौन कौन है, ओके। ये सब फाइल करने पड़ेंगे, एंड देन सब्सिक्वेंटली it will ask for your draft description, figures, tables, okay. बेटर ये है कि आप एक जो है किसी भी एक क्लेम को, एक फाइल को सर्च करें। जैसे सपोज क्या है, मैंने यहाँ पे पब्लिक सर्च किया पेटेंट का, ओके, एंड सपोज मैं टाइटल में इंडक्शन मोटर डालू, इंडक्शन मोटर, ओके, एंड कैप्चर कर देते हैं इसका SJ2HG। we have, these are the स्टेटस, और ये सब लेटेस्ट है, ये 2022 का ही है, 2022 है ना, डिजाइन ऑफ लो वोल्टेज इंडक्शन मोटर पंप फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, ओके। ये पब्लिश्ड है, अभी अवार्ड नहीं है, और 26/5/2022 को ही जो है इसने पेटेंट फाइल किया है, ठीक है। चलिए हम इसके अंदर जाके देखें, हु इज द इन्वेंटर देयर, इलेक्ट्रिकल फील्ड क्लासिफिकेशन, these are the 1 2 3 4 5 are the inventors. Mr. P.S. Divakar, assistant professor of Hindustan College of Engineering, Coimbatore, okay. These are the 5 assistant professor and 1 professor from Tamil Nadu, Coimbatore, okay. What they have filed, okay. अब suppose ऐसा पेटेंट तो मैं भी लिख सकता हूँ, आपके मन में थोड़ी सी क्यूरियोसिटी जागृत होगी, तो आप देखो इन्होंने क्या फाइल किया, ठीक है। तो व्यू एप्लीकेशन डिटेल्स एंड कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, हम एप्लीकेशन स्टेटस में आए, फाइल किया है और पब्लिश हो चुका है। अभी क्या हुआ, फाइल किया है और पब्लिश हो चुका है। RQ फाइल्ड अंडर एग्जामिनेशन डिस्पेंस, ये इसकी पेंडिंग है, ठीक है। ये इसका पूरा ग्राफ आ रहा है। ऑर्डिनरी एप्लीकेशन है, टाइप ऑफ एप्लीकेशन कैसी है, ऑर्डिनरी एप्लीकेशन है, ठीक है। नाउ इन्होंने क्या डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, they have submitted these documents,
ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने कहा, अगर आप किसी अटॉर्नी से फाइल करा रहे हैं तो आप उसको फॉर्म 1 उसको साइन करके देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप खुद कर रहे हैं देन यू कैन डू इट एट योर सेल्फ। ओके, इन्होंने अर्ली पब्लिकेशन चार्ज भरा है तो इनका 1 महीने में पब्लिश हो गया। मई में इन्होंने सबमिट कराया था और जून से पहले पब्लिश हो गया, है ना। 26 मई को पब्लिश कराया और ये जो है जून में पब्लिश हो गया, तो विद इन 1 मंथ पब्लिश हो गया। ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से पब्लिश कर रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट दिया, टाइटल पेज कंप्लीट का सर्टिफिकेट दिया, फॉर्म 1 दिया, एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट दिए, डिस्क्रिप्शन, दिस आर डिस्क्रिप्शन एंड दीज आर द क्लेम्स। व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन देयर? दिस इज द डिस्क्रिप्शन दे हैव गिवन, वेरी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे हैव गिवन। ओके, सिंगल पेज का डिस्क्रिप्शन दिया है, वर्क फ्लो डायग्राम दिया है कि हम ऐसा कोई सिस्टम बना रहे हैं। ठीक है, प्रॉब्ली देखिए, ऐसे जरूरी नहीं है कि इस तरह के हर एक फाइल किया हुआ पेटेंट अवार्ड भी हो जाए। अच्छे पेटेंट भी फाइल होते हैं, बुरे पेटेंट भी फाइल होते हैं। आप लोगों के पेटेंट्स को पढ़िए, आपको नजर आएगा लोग क्या क्या फाइल कर रहे हैं। लेट द सी अदर व्हाट अदर पीपल आर डूइंग, और अगर ऐसा मेरे को लर्न हो जाता है तो मैं खुद भी फाइल करने की कोशिश करूंगा। लेट्स सी कि फर्स्ट टाइम में हो सकता है मैंने फाइल किया और वो टर्न डाउन हो गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फाइल करेंगे तो एटलीस्ट हमें रास्ता तो मिलेगा इस चीज का। ओके, so on the site of this IP India all such documentation are available. I request each and every one from you कि आप लोग इसको एक बार अक्रॉस जरूर जाएं, है ना। So this is all from my side. If there is any question, then you may ask. Thank you so much, sir. Thank you, thank you. I request all the participants, if you are having any query, any doubts, you can feel free to ask to sir. Participants, if you are having any query, you can ask to our expert. Hello, sir. Sir, I one question. How can a student know his work is patentable? Hello. पता चल जाएगा। देखिए, पहली चीज तो मैं आपको कहूँ, नोवेल्टी सर्च एक आर्टिकल होता है, नोवेल्टी सर्च, है ना। वो एक अलग से सेपरेट ब्रांचिंग है जिसके ऊपर अपन जो है कभी और बात कर सकते हैं। प्रोफेशनली भी नोवेल्टी सर्च करके लोग बाग देते हैं। ओके, कोई चार्ज लेता है, कोई 2,000 रुपये लेता है, कोई 3,000 रुपये लेता है। तो नोवेल्टी सर्च करवा लीजिए, आप अपना जो है ड्राफ्ट उसको दे दीजिए, वो नोवेल्टी सर्च करके दे देगा आपको कि आपके जैसे सिमिलर वर्क कितने रिपोर्टेड हुए हैं। ओके, द अदर पार्ट दैट यू हैव आस्क्ड कि ये जो मेरे हाथ में है ये पेटेंटेबल है या नहीं है, तो लेट द एग्जामिनर देयर हैव टू डिसाइड। हम अगर अपने में ही सोचते रहेंगे कि ये पेटेंटेबल है क्या, ये पेटेंटेबल नहीं है क्या, तो सोचते रह जाएंगे। लेट इट टू फाइल, लेट देम डिसाइड इट विल बी पेटेंटेबल और नॉट। ओके, वहां पे जो पेटेंट जो है पेटेंट सर्च ऑफिसर्स हैं, पेटेंट ग्रांट ऑफिसर्स हैं, लेट देम टू डिसाइड। हमारा काम क्या है, हम फाइल करें। ओके, एंड डेफिनेटली फर्स्ट टाइम आप फाइल करेंगे, हो सकता है ना मिले, हो सकता है टर्न डाउन ही हो जाए, हो सकता है आप सक्सेसफुली ना हो फाइल करने में ही सकते, बट लेटर ऑन, जैसे हम सब लोग रिसर्च पेपर लिखते हैं, हमें किसने सिखाया रिसर्च पेपर लिखना? और पहली बार जब रिसर्च पेपर भेजा था तो रिजेक्ट होके नहीं आया था क्या? तो पहली बार आता है, रिजेक्ट होके आ जाता है,
फिर अपन और मेहनत करते हैं, हम उस बारे में और सोचते हैं और चीजों को ढूंढते हैं, एंड स्लोली वी गेन दैट एक्सपर्टाइज, and then we got paper in selected in Wiley, IEEE or IET, RPG, any method. Like, so it's the process and effort we need to start basically. Okay, sir. Thank you. Thank you very much, sir. So thank you for inviting Dr. Ashok, and thank you for patientful hearing, and thank you again. Thank you so much, sir. I would like to express my gratitude to our today's expert, Dr. D.K. Palwalia, sir, to have you here, sir. It was really amazing session of yours. Hopefully, all of our participants will get benefited from your talk. And thank you so much for having you here in very short duration of time, sir, and short notice period, sir. Thanks a lot to have you here, sir. Now I would like to request our Dean Academics, Dr. Namish Mehta, sir, to congratulate our students for today's successful lecture of Impact Lecture Series, which was sponsored by IIC Institute Innovation Council and AICTE, Government of India. Please, sir. Mute, sir. Sir, please unmute yourself. No, sir, you are not audible, sir. Anyway, sir, no problem. Thank you, participants, for your presence. And I would like to request all of you to please fill feedback from which is the link has been shared in chat box so that we can issue e-certificate to you as soon as possible. Okay. So please fill the feedback link which has been shared in chat box. Thank you. Our second lecture of today's lecture series will be scheduled from 2 p.m. So I request all of you to join and be on the time. Thank you.